Hello everyone, please do hurry and join our live class so that we can start our class, and also share to your friends so that they can also attend the class. Okay, please do hurry and join our live session. Good evening, Devashmita. Good evening, Rita. Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to the another live class of Eduins. I hope you all are doing well and your preparation for your board exam also going well, right? In previous class we have discussed about the second chapter, that is acid, base and salt. Okay, so how many of you present in the previous class? That we have already discussed that what is acid, what is acidity, what is pH, and what are the properties of a acid, what is strong acid, what is weak acid. We have already discussed in our previous class, and also we have already practiced some equation in balanced. Okay, so those who are not versed still, you may visit the live class, and after this session, okay, after this live session you may visit our playlist and must watch the class. ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप जो भी नए हैं इस चैनल में, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर YouTube channel Eduins CBSE, and please share to your friends so that they can also attend the live class, because this is absolutely free, okay, for all of you. So Eduins also help the students to betterment of their exam preparation. आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उससे और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फ्री का क्लास होता है वहां पे आपका एक सिंपल सा टॉपिक और कोई हार्ड टॉपिक उनमें से बातचीत करते हैं, तो फुल्ली डिस्कस करते हैं हम लोग कि कौन सा एंगल में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये सब. As well as we are already discussing or covering the West Bengal board, where the board students, that is the Madhyamik 2027 also, and we are also launched the paid batch, that is the digital paid batch for the West Bengal 2027 Madhyamik. Okay, and the another YouTube channel, that is the Eduins Higher Secondary, where we will taught the students of higher secondary class 11 and 12, right? Okay,
तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. So we have already completed the properties of a acid. What are the properties of an acid? We have already discussed that an acid is the base, the pH of an acid is less than 7. This is sour in taste. Okay, and the acids found in both your mineral form as well as in organic form. The mineral acids, that is H2SO4, HNO3, HCl, are the mineral acid, and these are the strong acids. And also the acids, hi Shekhar, and the acids found in the organisms or any fruits, any vegetables, these are known as organic acid, and these acids are known as your weak acid. In case of human or other animals, the stomach acid, which is known as HCl, we have already discussed in our previous class, that is the HCl found in human stomach. So is it organic acid or is it a mineral acid? We have already discussed that this is a mineral acid, not the organic acid. Okay, now today's class we will discuss about the first one, that is we have already discussed all these topics. Now all the compounds containing hydrogen are not acids. We have already told in previous class, we have already discussed that those compounds that release H plus ions. Acids are the compounds which release the H plus ions in the aqueous solution. Okay. Shekhar? शेखर क्या बोलना चाहते हो आप? Okay, so acid are those compounds those releases the H plus ion in their aqueous solution, but all the compounds contain hydrogen are not able to release the hydrogen ion, so that all compounds containing hydrogen are not acids. Like what? In case of acid, like your H2SO4. Okay, we know this is the सल्फ्यूरिक एसिड. ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है? H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाता है ना? सो हाइड्रोजन आयन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द H2SO4 or sulfuric acid, which can conduct the electricity because this is electrically charged particle, as it is a positive ion. Okay, as it is a positive ion, right? Okay, so also there have some compounds like your glucose, that is 6,6H12O6, right? This is a compound. It also contains the hydrogen ion. It is also contain the hydrogen ion, but these hydrogen ion not. This is also contain the hydrogen, but it will not able to produce the hydrogen ion. Clear? So all the compounds contain hydrogen are not acids. Why? Because they cannot dissociate in ions, or they cannot release the hydrogen ions. That's why the compounds contain hydrogen but do not able to
release the hydrogen ion or break down in the aqueous solution as an ionic form, these are not considered as the acid. So the acids must contain hydrogen, and the special features of an acid, they can release hydrogen ion in the aqueous solution. Is it clear? कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास है शेखर, ये क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास है। ओके Okay, so the acid, if we write down here that the acid can, or an acid can conduct electricity. Okay, acid can conduct electricity due to the ions. Okay, due to the ions. So now the question is, what is ion, or what are the ions? आप में से किसी को पता है कि आयन क्या है? व्हाट इज आयन? किसी को पता है कि आयन क्या होता है? आयन क्या है? एनीवन? ओके, चलिए। सो आयन basically the charged particle. What is ion? Charged particle. Okay, so the ions actually released by the acid in aqueous solution. In case of acid, that acids are releases charged particles in their aqueous solution, because the acid dissociate into small particles in aqueous solution. ओके, एसिड जो होता है वो aqueous solution में स्मॉल पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है और डिवाइड हो जाता है, जो कि चार्ज पार्टिकल होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज्ड, लाइक दिस H2SO4 is dissociate in H plus plus SO4 minus ion. Okay. Hi Ramanand.
सो ये जो डिसोसिएशन है, इस दिस डिसोसिएशन की वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होता है. हियर we have made a application, or we have made, we can conduct that, we can made a test. Like what? Like in the beaker one we have taken a glucose solution. Okay, ये वाला जो पहला वाला विकार है इसमें हम लोग एक ग्लूकोज का सोल्यूशन लेंगे, और दूसरा वाला जो विकार है ये वाला, इसमें लेंगे एक एसिड का सोल्यूशन. सो यहां पे है C6H12O6 एंड यहां पे है H2SO4. Clear? Then we will connect two electrodes here and a valve connection here. When the electricity started, we started the electricity, we will look that, we will observe that the bulb which attached with the acid solution, it will blink it, but in case of glucose solution this is remain off. And this observation, based on this observation we can conclude that the solution of an acid can electricity, but the hydrogen containing compound like glucose cannot conduct the electricity, right? Clear to all of you? Is it clear to all of you? चलिए कंक्लूजन क्या है ये हम लिख लेते हैं. चलिए, so from this experiment we can conclude that the hydrogen containing compound like glucose, or it may be your alcohol, cannot conduct electricity like acids. Why? Because they do not dissociate, or this is known as ionized. In the aqueous solution. Clear? So this is the conclusion. The hydrogen containing compound like your glucose, alcohol cannot conduct the electricity. Why? Because they do not dissociate in the aqueous solution. Okay? They do not dissociate in the aqueous solution. और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि do not produce H plus ion in aqueous solution.
Okay, clear to all of you? Is it clear to all of you? ओके चलो, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, जो प्लेन डिस्टिल्ड वाटर cannot conduct electricity. Why? The answer is the simple, because they do not contain, or it does not contain any ions, but the rainwater can conduct the electricity. Water can conduct the electricity. Why? Because we know the rainwater have some acidic properties. Okay, the pH is slightly acidic. Why? Because we know the carbon dioxide, that is CO2, present in our atmosphere or in our surroundings. So when the carbon dioxide react with the rainwater, it will form the carbonic acid. Okay, it will form the carbonic acid, and this carbonic acid, though this is an acid, that's why the rainwater is slightly acidic. Beside that, there have also sulfur dioxide, there have also nitrous oxide. They are also react with the water and produce the H2SO4, the HNO3, like your sulfuric acid, nitric acid. Okay, so that's why the rainwater can conduct the electricity. So for your exam, that is a common question can made that the distilled water cannot conduct the electricity, but the rainwater can conduct the electricity. Why? What is the reason? Okay, what is the reason? और यहाँ पे दे सकते हैं कि ये है assertion, वो है यहाँ पे assertion दे देते हैं कि रेन वाटर कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, एंड रीजन में दिया हुआ है कि रेन वाटर कंटेन हाइड्रोजन, your sulfuric acid or nitric acid. Is it true? Assertion is true, reason is false, like as it is presented in our exam. So both are true, assertion and reason, because the rainwater conduct electricity. Why? Because it contains the sulfuric acid. How it will react? The rainwater react with the sulfur dioxide of your atmosphere, and it will produce the your sulfuric acid, and this sulfuric acid is slightly acidic. That's why they can conduct the electricity. Clear? Clear?
ओके चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है वो अगर डिसॉल्व कंडीशन में नहीं है, ड्राई एसिड है, दिस इज बेसिकली द ड्राई एसिड। क्या बोला है? ड्राई एसिड डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। हाउ? सो टू प्रूव दिस we can perform a test. How? Suppose we have taken the sodium chloride, that is NaCl, sodium chloride, there is NaCl plus your concentrated H2SO4, that is concentrated sulfuric acid. Okay, it will react and produce HCl, hydrogen chloride or hydrochloric acid. This is basically hydrogen chloride. Why? Because this HCl is produced in dry condition. Okay, this HCl is produced in dry condition. Okay, this is a gas actually. This is basically a gas and dry condition. So this is the hydrogen chloride. Okay, and this hydrogen chloride will release from this delivery tube. The test tube, we have taken the concentrated H2SO4 and NaCl. First of all, we will take the NaCl and then slowly add the concentrated H2SO4. Then fitted a cork or we will fitted a cork in the test tube mouth and there adjust a delivery tube. After that, the HCl gas is produced, that is hydrogen chloride gas will be produced by the reaction of NaCl and H2SO4 and it will release by this delivery tube. Okay, when we will touch the litmus paper, when we will touch the litmus paper, it will not show any changes. Okay, it will not show any changes. Clear? But when we will touch the or came closer to the moist litmus paper, it will change its color because the moist litmus paper contain water, and when the HCl gas mixed with water or in moist condition or in presence of water, it will show its acidic behavior. So dry acid do not show its acidic behavior. Okay, do not show its acidic behavior. Clear? Clear to all of you? सभी को समझ में आया? ओके, आप लोग ये बताओ कि एसिड में कौन सा लिटमस चेंज होता है और किस कलर में चेंज होता है, ये बताओ। कौन सा लिटमस एसिड में चेंज होता है? इज इट ब्लू लिटमस और इज इट रेड लिटमस?
किसी को पता है? एनीवन? As simple as that. It is यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि एसिड में ब्लू लिटमस turn into red. Clear? Blue litmus turn into red. Clear? चलो इसके बाद क्या है देख लेते हैं। इसके बाद शायद है कि एसिड का यूजेस क्या है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स? सो एसिड का यूजेस, पहला जो कि क्लीनिंग एजेंट से यूज होता है, लाइक योर वॉशिंग बेसिन, योर वॉश बेसिन, योर बाथरूम appliances, okay, used in household cleaners and descaling products. Okay, this is the first use of an acid. This is the first use of an acid. Secondly, the acids are used as a fertilizer. How? The name of an acid, tell me the name of an acid which is used as a fertilizer. Anyone? Anyone? The acid which is used as a fertilizer or producing the fertilizer. Anyone? The important in the production in fertilizer, or important in the production of fertilizer. Which acid? That is nitric acid, HNO3, which actually help to produce the fertilizer, that is ammonium nitrate. Okay, ammonium nitrate. Clear? The acid which is known as HNO3 or nitric acid will help to produce the ammonium nitrate, which is a fertilizer. Clear? Okay, next for the medicine. Next for the medicine used in pharmaceuticals and medical treatment. The fourth one, that is in food industry, use the acid as a food preservatives. Okay, like your vinegar, like, and the vinegar contain, we all know, that is the acetic acid. Okay, vinegar में क्या रहता है? Acetic acid रहता है। as well as वो प्रिजर्वेटिव्स के अलावा वो फ्लेवरिंग के काम में भी आता है। ठीक है, सो फूड इंडस्ट्री में एसिड का क्या यूज है? पहला वाला कि वो प्रिजर्वेटिव के थ्रू यूज होता है, और ऑल्सो इट कैन यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। नाउ द फिफ्थ वन, दैट इज it is used in battery industry. How? The sulfuric acid used in car batteries. Okay, कार का जो बैटरीज होता है वहां पे कौन सा एसिड यूज होता है? This is the sulfuric acid, H2SO4. ठीक है, the last one, that is 6, used the industrial applications, used manufacturing the metal processing, as well as यहाँ पे और एक भी एप्लीकेशन है जो कि प्लास्टिक यूज में भी, प्लास्टिक का जो सामान होता है वो चेयर है, बास्केट एटसेट्रा,
सो वहां पे भी एसिड का यूज होता है, बट यहाँ पे स्टील प्रोड्यूसिंग में कौन सा एसिड यूज होता है? स्टील प्रोड्यूसिंग में मेनली यूज होता है कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और मेटल प्रोसेसिंग में कौन सा होता है? स्टील के लिए स्टील इंडस्ट्री में होता है HCl का यूज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड फॉर द स्टील इंडस्ट्री, एक्चुअली दिस एसिड्स remove the oxide flame from the steel object. Okay, that is steel is a galvanized metal, so वो जो वहां का जो स्टेन होता है वो रिमूव करने के लिए ये HCl यूज होता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? Also this HCl, okay, this is used in metal industry or your steel preparation, where जहां पे स्टील प्रिपेयर होता है, वो तैयार होता है, वहां पे HCl का यूज होता है। उसके अलावा HCl और भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, लाइक योर लेदर इंडस्ट्री। ओके, लेदर इंडस्ट्री में भी HCl का यूज होता है। लेदर इंडस्ट्री, योर फूड इंडस्ट्री, योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, फूड, टेक्सटाइल, ओके, बहुत सारा इंडस्ट्री में। डाई इंडस्ट्री में भी यूज होता है। प्रिपरेशन इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये है कि एसिड का, ठीक है, HCl का जो यूजेस है मेनली यहाँ पे डाई और स्टेनिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इसमें यूज होता है। ऑल्सो द एसिड विच इज नोन एज द नाइट्रिक एसिड और HNO3 which is used as a fertilizer or used in fertilizer industry or the प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। उसके अलावा ये जो नाइट्रिक एसिड है इसको हम लोग यूज कहां करते हैं? वो कि जो प्लास्टिक का इंडस्ट्री होता है, ठीक है, प्लास्टिक का इंडस्ट्री होता है वहां पे यूज करते हैं। तो ये वाला योर फर्टिलाइजर, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये नाइट्रिक एसिड से एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो है वो तैयार होता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव मटेरियल क्या है? वो है TNT, टाई नाइट्रोटोलुइन। ओके, ये एक्सप्लोसिव तैयार करता है। सो नाइट्रिक एसिड से एक्सप्लोसिव तैयार होता है। क्या है एक्सप्लोसिव का नाम? TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्लियर? क्लियर? सो यहां पे फर्टिलाइजर, प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड एक्सप्लोसिव तैयार के लिए ये यूज होता है। उसके अलावा ये डाई इंडस्ट्री में भी यूज होता है। सो यहाँ पे जो मिनरल एसिड है उसका यूजेस ज्यादा है। ठीक है, सो HCl का मैंने बोला, और उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड है उसका भी मैंने बोला कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होता है, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और जो डाई होता है डाई के लिए भी यूज किया जाता है। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट एसिड ऑफ मिनरल एसिड विच इज नोन एज द सल्फ्यूरिक एसिड, वो कहां यूज होता है? किसी को पता है वो कहां यूज होता है? ये जो H2SO4 है वो कहां यूज होता है?
यहाँ पे जो H2SO4 है ये भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यूज होता है. Fertilizer, how the from the nitric acid produced or the nitric acid used for the production of ammonium nitrate, and the sulfuric acid is actually used for the production of ammonium sulfate. Okay, nitric acid, ammonium nitrate, sulfuric acid, ammonium sulfate. Clear? Fertilizer. Then it will be used as a dye industry. It will be used as a plastic industry. Okay, fertilizer, dye, plastic industry. Then your पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है. उसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है, सिंथेटिक फाइबर्स में इंडस्ट्री जो होता है वहां पे यूज होता है. उसके अलावा डिटर्जेंट बनाने के लिए, ओके, डिटर्जेंट बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, डिटर्जेंट एक्सप्लोसिव बनाने के लिए. उसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और एप्लीकेशन दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड कार का जो बैटरी होता है उसे बनाने के लिए यूज किया जाता है. कार बैटरी, ओके, कार बैटरी बनाने के लिए यूज होता है. तो ये था तीनों मिनरल एसिड का यूजेस. दिस इज द ओवरऑल यूजेस ऑफ एसिड्स. और तीनों जो मिनरल एसिड्स है दैट इज HCl, HNO3 and H2SO4. Okay, so these are the uses of the three mineral acids. Clear? Is it clear to all of you? सभी को समझ में आया? Okay, I hope this is clear to all of you. That is the uses or what are the applications of the acid, what are the applications of the mineral acids, three mineral acids mainly, HCl, H2SO4 and HNO3, and why all hydrogen containing compounds are not acid, and why the acid cannot show its acidic behavior in the dry condition. We have discussed in today's class. In next class we will start the next part, that is the bases and alkalis. Bases and alkalis. What are the bases and what are the alkali, and what is the difference between the base and alkali? What is the basic difference between base and alkali? And we will study the strong base, strong एसिड्स के तरह स्ट्रॉन्ग बेस क्या है और वीक बेस क्या है. उसके बाद बेस का जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. और टुमारो आपका इंग्लिश क्लास है 6 बजे से. ठीक है. इन 6 PM you have the English class. Like today, tomorrow you have the English class. ठीक है. और जो CBSE का every day from 6 PM you will get a free live demo in our YouTube channel Eduins CBSE. So आप सभी लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए. मत भूलिए कि जो नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन प्रेस करने से आपका मोबाइल में सीधा चला जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे
डेली एक करके लाइव क्लास हम लोग रखते हैं आपका बोर्ड प्रिपरेशन अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। वी विल मीट in our next class, and in next class we will discuss in our upcoming topics. Okay, so bye everyone, take care.